Fine. So let us try the remaining problems. And these three are the second round problems. Those five are the first round. So from there you can get what 16 marks, and then from here you got around negative what again 10 marks. So yeah, fine. So let us start with this question only. Fine. So what it says, first it is determinant is there, na? Fine. Hello. So let's say this is A, this is B, this is C. So it is written what? This will be A multiplied by 12 minus 15. So A into 12 minus 15 minus B into 6 minus 12 and plus C into what are you getting? 5 minus 8 again. Fine. So it is the minus 3A plus 6B minus 3C should be 0 to x FDT. Now let's put the values there. So minus 3 times of A is what? A is the 0 to x square f root 3 dt. And minus 2b will become the minus 2 fx plus 0 to x e raised to the power t square by 2 plus t by 6 dt will come. And that is getting equal to what? 0 to x ft dt. Fine. So now at a step what to do? Simply apply what? Limits, na? At this step. So it will be what? Minus 3 times f of x into 2x minus 2 f dash x plus e raised to the power x square by 2 plus x by 6. And that should be equals to what? That should be equals to f of x, na? This time. Huh? Y square. I differentiated, na? F of x into 2x there. Y of dash x will come. It's Leibniz, na? Fine. So now it is the minus 6x of x or plus 6f dash x and minus 3 e to the power x square by 2 plus x by 6 and minus of x equal to 0. This is the fine. So it is the minus times 6x plus 1 into f of x plus 6f dash x. That should be equals to 3 e to the power x square by 2 plus x by 6 is there. Now divide by the 6 now. So f dash x minus x plus 1 by 6. It's a linear equation after that. 3 by 6 e to the power x square by 2 plus x by 6. Now taking factor will be what? E to the power minus x square by 2 minus x by 6, isn't it? So it is that what? Fx into e to the power minus x square by 2 minus x by 6 should be equal to 1 by 2. That will cancel dx. So it is going to be fx into e to the power minus x square by 2 minus x by 6 should be equals to x by 2 plus c. And the function will be what? Function will be x by 2 plus c into e to the power x square by 2 plus x by 6. Fine. X square by 2 plus x by 6. Got it? एंड इस रिलेशन को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तुमने x को अगर 0 पुट कर दिया जो इनिशियल रिलेशन है तो यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे this will also vanishes f0 is coming out to be what 0 ना isn't it ये क्या f0 is coming out to be 0 f0 is 0 then यहाँ पे तो यूज करो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 is equal to 0 plus c into 1 ना तो c is also what c is 0
तो फंक्शन कितना आ गया? फंक्शन गॉट इज, तो डिस्पाइट में कि क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है, पर अगर तुम इसे ट्राई कर तो ये हो जाता है आराम से। फंक्शन आएगा तो सब तो कर देंगे ना उसके बाद, नहीं? तो फंक्शन एक्स बाई टू इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स बाई सिक्स। ओके, नाउ ऑप्शन पढ़ते हैं। तो पहले पहले चेक करने लगे ऑप्शन है तुम्हारे पास ए और डी। तो वो हमारा क्या है? एक्स बाई टू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स बाई सिक्स। आई गेस एक्स स्क्वायर बाई टू ही है ना वो? या आई गेस इसको हमको डिफरेंशिएट करना ज्यादा प्रेफर रहेगा। डिफरेंशिएट कर दो कितना आ जाएगा? एफ सिक्स आ जाएगा ना इसका आंसर एक बार में। नहीं, इसकी लिमिट। और यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, उसको सिक्स पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? सिक्स स्क्वायर बाई टू 19 होंगे तो थ्री, ये अप्रोच करा है ना इसको, जीरो ऊपर विजन है। डिफरेंशिएटेड तो वन बाई टू बाहर ले लो, एक्स का डेरिवेटिव वन आ गया इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स बाई सिक्स प्लस। So the harder it looks, the easier it is, isn't it? In maximum cases, exceptions are valid. X by 2, e की power x square by 2 plus x by 6 is there, and now multiply by the x plus 1 by 6. Now simply substitute x is what? 6, isn't it? Uh, yeah, we are getting this derivative will be, this is e की power 19, so 1 by 2 into e की power 19 plus 2, right? And now 3 e की power 19 into 6 plus 1 by 6 is what? 6 plus 3 e की power 19 by 6. So it is 2 e की power 19, right? 3 plus 1, I mean 1 by 2, 1 by 2, okay, sorry, e की power 19. And this is like, this is, got it, 19 is coming, fine? A is correct? That 1 by 2 is also there, no? Initially. So this 1 by 2 and this 1 by 2 fuse to 1, no? So 18 plus 1, that is 19, fine? Now to the D part. So gx equals to fx by x e की power x is there, so that maximum we have to comment upon. So okay. And domain is r plus, so इसको डिवाइड करना x e की पावर x से तो कितना आ जाएगा? x लिख लेते हैं इसे, x by 2 e की पावर x square by 2 plus x by 6 divided by the x e की power x will come. So we have the 1 by 2 e की power x square by 2 plus x by 6 minus x, that is minus 5 x by 6. Fine. So its derivative will be what? Its derivative will be e की power x square by 2 minus 5x by 6 upon 2 into x minus 5 by 6. So there is only one point now that is coming out to be what? Derivative 0, that is what? And maximum is of course infinity. Now this function. Maximum तो infinity चला जाएगा ना, e की power infinity will be infinity, right? So ये तो पक्का मिनिमा ही होगा ना then? X 5 by 6 is what? Local minima. That is correct? So A and D is correct for sure. Now it says the number of points where the function fx minus a, and what is a? What is a? The for h, okay. Function is this one, so is not differentiable for a is 1 equal to 1. And f mod x is then this one, okay. So is any particular positive number and that minus this one. Achha. So first we have to plot the graph of this function and accordingly we can analyze, isn't it? First draw the graph of f of x, then this graph also we can draw and accordingly, fine. And it's mentioned in the question x belongs to r plus only, right? Don't forget this thing. Okay? R plus means x equals 0, 0 is not even allowed. Fine? अगर ये ध्यान से गया तो फिर पूरा आंसर गलत ही आएगा ऑफ कोर्स। एक और पता है, लेकिन इन 2018 आई रिमेंबर देयर इज अ क्वेश्चन द एडवांस्ड, उसका आंसर हमारा सब सही था, बट उनका जो डोमेन था वो ये था, जीरो टू कुछ करके लिखा हुआ था, और इन्होंने खुद एक ऑप्शन में एफ ऑफ जीरो निकलवाया था, और जो फंक्शन हम निकालोगे अगर और उससे पुट करके वो मैच करेगा, बट क्योंकि अलाउड ही नहीं है, फिर दैट ऑप्शन वाज इनकरेक्ट। सो मैनी मार्क दैट इज करेक्ट बिकॉज वो मैच तो कर ही रहा था, बट एट द फाइनल आंसर की दे ओनली गॉट -2। So sometimes these conditions are very important, and these papers also comprise of this thing only. Like they will incorporate this kind of information. So it's a very good papers, you know. जो भी बना रहा है काफी दिमाग है उसके पास, isn't it? सॉल्व तो कोई भी कर देगा, आई I मीन कोई तो नहीं, बट
बस समझ जाओ, इजंट इट? ये हाँ, अच्छा हाँ, इन दिस केस जीरो इज अलाउड, आई मीन mentioned already ना, so in this case it will work. Okay, so let us draw the graph of this function. So f0 is 0 only na, fine. And its derivative, I have to take the, its derivative will be what? Its derivative will be 1 by 2 e to the power x square by 2 plus x by 6 plus 1 by 2 into x into 1 by 6 plus x into again this thing e to the power x square by 2 plus x by 6. Then take out the common as this particular factor. So you're left out with what? 1 by 2. 1 by 2 ये पूरा बाहर निकाल. So it's going to be 1 plus x into 1 by 6 plus x, isn't it? और जब x तुम्हारा 0 से बड़ा होता है पॉजिटिव आ गया ना डेरिवेटिव, isn't it? This thing is there. Hello? So 1 plus x into 1 by 6 plus x, that is again positive only ना. तो function is increasing, तो यहाँ से ऐसे चला जाएगा, fine. हेलो, तो अगर मेरे को क्या करना है इसका एफ एक्स माइनस है, अगर मेरे को जीरो पे जीरो, अगर मेरे को उसको नीचे लेके जाना है, अगर मेरे को उसको नीचे लेके जाना है तो ये ऐसे नीचे चला जाएगा, फाइन. ये नीचे गया और उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि मैंने क्या करा, व्हाट हैव डिड इज आई टेक द मॉड ना, तो मॉड टेको तो ऊपर चला जाएगा ना फिर ऐसे ये चीज. तो जैसे डन डिफिनेट वन पॉइंट का ये देखो ग्राफ राइट, डिडंट गेट इट. So this is the graph is place. So that's why. Okay, at one point it is correct. And the second part is don't forget it is r plus only. So there like f mod x और f का कोई मतलब नहीं है ना, right? F mod x is same as mod f x only ना, because x is always positive. So इसका आंसर भी क्या आएगा? सेम ही आएगा ना? It is not. This is incorrect. Got it? अदरवाइज तुम करोगे तो तुम्हारे सर ऑप्शन तुम्हें मैच करने लग जाएंगे वो एक चीजें विषय, अगर शायद तुमने इसका ध्यान नहीं लगा तो. बट दैट्स हाउ यू टू ऑब्जर्व केयरफुली. ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. लाइक दैट एक्चुअली गुड क्वेश्चन फॉर द लाइक पूरी कैलकुलस तुम्हारी अच्छे से एकदम रिवाइज भी हो रही है, नहीं काफी अच्छे अच्छे एडवांस एप्लीकेशन है, सो यू शुड एक बार खुद से जरूर करना, फाइन, मेरे बताने के बाद. वरना अगर एनालाइज नहीं करोगे तो फिर नेक्स्ट उसको पेपर्स में स्कोर इंप्रूव होगा कैसे? लॉजिकल सी बात है ना. तो फंक्शन ये दे रखा है, मेरे को इसका ग्राफ प्लॉट करना है, एम विद नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड. ओके, तो सबसे पहली बात तो जीरो से टू के बीच में मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, और यहाँ पे जेएफ देखे तो पूरी ऐसी तैसी हो रखी है. इट्स नॉट गोना बी सिंपल फॉर श्योर. व्हाट द आंसर ऑफ दिस वन? क्या था आंसर?